Assalamu alaikum and very good afternoon to all of you. I can see along my right and left most of the students, they are our taught. So they might be knowing most of the things which I'll be discussing here during this lecture. And some of the new faces are there. Perhaps they are the participants from outside. Okay. Nice meeting you all. Basically, are you comfortable in English? Fine. I will be using both languages, Urdu and English. Basically, when we talk about the rainbow trout culture, as Sir was saying that, and we all know that rainbow trout is very sensitive fish. Okay, means even a feeble up down in the water quality or physical chemical parameters of water, it will lead to the disastrous consequences in this rainbow trout culture. Okay, so if you are an entrepreneur and wishing to start your own venture, while keeping other things in mind, you also have to keep in mind that your aqua farm is not contaminated with any chemical which is very, very hazardous to any snow trout aqua farm. Okay? You might have studied during this training program about the fluctuation in DO and the fluctuation in ammonia, and then Sir was saying that transparent feed should be there so as to reduce the turbidity and all. But what I may be dealing this time in this lecture is the hazardous chemicals which are present in our environment at any cost. They are unavoidable, which cannot be actually restricted, because these chemicals reach our aqua farms in one way or the other. Okay? And our aqua farms, as you know, that every pond or every raceway or every water body, they form the ultimate sink actually. What do you mean ultimate sink? They are placed naturally, topographically they are placed in the depressions. Yeah? So whatever you throw in the catchment, it will ultimately reach where? In the aquatic. And more particularly when you talk about the scenario of Kashmir, when you have a lot of horticultural practices going on, you are an apple orchardist, you are a vegetable grower, you have your own paddy and other fields. It's mandatory for us to spray the chemicals like pesticides and metals, which are actually the consequences of breakdown of pesticide. These pesticides, they are not completely absorbed by those plants, and ultimately they remain in the environment, they remain in the soils, and ultimately reach the water bodies. Okay? Now you have to be very much careful when the pesticide is being sprayed in the catchment. Your aqua farm is restricted for their entrance. Okay? You have to prevent your aqua farm, you have to prevent your culture venture from entering those chemicals into your. How can they be entered? Through water channels, number one. Number two, through aerial drift. You know, the students might be knowing what is the way of increasing oxygen in the water? One of agitation, isn't it? This agitation actually, in the air droplets, you have suspended chemicals like pesticides and all. Those droplets get mixed with the water which is present in the raceway. Okay? So you have to prevent the aerial drift as well. Number third, movement of soil. That is called as spray drift. Okay? And number next, there is leaching and percolation. Okay? These are the all ways by these chemicals will reach your aqua farm, and if not, they will cause the 100% mortality, but at least they will cause serious reduction in your trout culture growth. At the end, your net production will be very less, because since trout is very feeble, very sensitive to the climate or contaminants, even small amount of contaminant may cause entire mortality of the entire mass present in your raceways.
But if it's not very much in quantity, it will still have a serious impact on its growth, because it will cause the physiological dysfunctions in the fishes, isn't it? I won't go to the slide bit by bit. I'm just trying to give you an insight that whether you are in a position to start your own venture, to start an aqua farm, you must think, when we are starting a pond or a raceway, we have to study first the site selection. The first and foremost priority should be what? The selection of the site. For that, while keeping other things in mind, other things in consideration, the topography, the terrain, the availability of water, availability of electricity and all, which you have studied, but you should also keep in mind whether our aqua farms or our raceways, they are away from those places where an enormous amount of pesticides or chemicals are being sprayed. Okay? So, my topic is impact of pesticides in rainbow trout. It's a simple topic. But before going into the slides, this was an introductory note which I wanted to communicate to you. We just remove the slides. Okay. We see I'm dealing with toxicology. Okay. So let me briefly go to the definitions first, so that you will get acquainted with those. What is toxicology? It is the branch of science concerned with poisons, their nature, effects and antidotes. Means those poisons. आप कहेंगे कि सर हमारे पास क्या poison वगैरह है? You might have seen or you might have observed the samples coming to our faculty, where farmers report that our entire fishes got killed due to the unknown reasons. वो पानी ला रहे हैं, सर जरा इसको चेक कीजिए क्या हो गया, खासकर ट्राउट वाले. वो पानी ला रहे हैं, सर वाटर क्वालिटी चेक कीजिए, सर सुबह तो ठीक थी मछलियाँ, शाम को मर गई. They don't know, somebody out of their aqua farm, they have put the bleach powder in the water, and water was running, due to which all fishes got killed. Similarly, you might have seen a lot of incidences like in Nigin, in Dal Lake, twice in Dal Lake, one time in Nigin and one time in Jhelum. Only the lot of fishes got killed, and it was due to unknown reasons. One time among them, I remember that case was a sub judice case. हमारे पास कोर्ट से सैंपल आया to evaluate the presence of pesticides in Dal Lake, because it was those samples were sent by LCM, Lake Conservation and Management. They were of the notion that कि किसी ने pesticide spray किए हैं, and same was the reason. उसमें क्या हुआ था? उसमें किसी ने mischievously pesticide spray किया था, due to which जो उसकी local fishes थी, they got enormously killed near Santo SKIC. So this toxicology branch, what will it deal with? The science which will deal with the poisons, okay, their effects on the fish organisms and their antidotes as well. We have to come up with the antidotes which will try to decontaminate our lake, which will try to reduce the toxic effects of the chemicals. Yeah. और टॉक्सिन किसको बोलते हैं? किसी भी पॉइजन को, पॉइजन सब्सटेंस, ठीक है ना? आपको पता होगा जो बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स हैं, फाइटोटॉक्सिन्स वगैरह, है ना, जिसमें हम वो है ना सिगाट्रा पॉइजनिंग वगैरह. लेकिन टॉक्सिकेंट्स मींस दोज केमिकल्स व्हिच आर एक्चुअली ह्यूमन मेड, मैन मेड, सिंथेटिक, बट वी कैन नॉट अवॉइड देमसेल्व्स. आप हमको बताएंगे कि सर हम क्यों ये पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जब हमारे एनवायरनमेंट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है. You just switch to organic farming, है ना? Organic farming का concept है ना? You just switch to the vermicompost, है ना? तो इसका जवाब ये है, we cannot switch to organic farming 100%. We can reduce the use of pesticides. That is what we have to do. Okay? But we cannot completely switch to the organic farming, because the insect pests, they need to be mitigated by the chemicals which we spray. Okay? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये तो यही है, आ जाइए. ठीक है, ये जो हम पेस्टिसाइड्स की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद द पेस्टिसाइड्स फॉर लॉन्ग, एंड इन द सिनेरियो, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कश्मीर, we have lesser problems due to the metals, heavy metals or other compounds. But pesticides, their effects are profound, which have been reported by various scientists, including me,
in the natural water bodies, in the soils, and near the aqua farms as well. We are running a project, you might be all knowing. We have come up with the 14 pesticides, they are around present in the aqua farms, in the sediments. That data will be published soon. So, these pesticides, when they are used enormously, they are used non-judiciously, and they are used without the supervision of any scientific staff. For example, मैं आपको एक बात बताऊँ. When some years before we went on a survey, हम सर्वे पे गए around डल and आंचार. तो आपको पता है डल लेक और आंचार लेक के इर्द गिर्द वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, ऑर्चर्डिस्ट्स हैं. तो हमने सर्वे किया कि सर आप कौन कौन सा पेस्टिसाइड यूज करते हैं. ठीक है. फार्मर्स बेचारे मोस्ट ऑफ देम दे आर इलिटरेट. ठीक है. उन्होंने कहा कि सर हम तो ये करते हैं यूज. अच्छा ठीक है सर, कैसे यूज करते हैं? कोई आपको बताता है कुछ कि कैसे डालते हैं? बोलते हैं इस बाल्टी में 8 ठांड त्रावा या 2 ठांड त्रावा. ये जो एक बाल्टी में 1 ठांड या 2 ठांड डालते हैं ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल we will talk about the chlorpyrifos they were using. One this teaspoon of chlorpyrifos in 1 bucket of water, it means it's more than 8 ppm or 9 ppm. Means 8 or 9 ppm. However, the recommended dose of chlorpyrifos is 0.001 ppm. ठीक है. वो क्या कर रहा है बेचारा? अच्छा, उसको ये भी नोशन है कि भाई एक के बजाय अगर 2 ढक्कन डाल दिए तो हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो अच्छे से मर जाएंगे. तो क्या दिक्कत है? तो सर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें कितना डालना है? जी हमें किसी ने बताया. जी आपको पता है कि यहाँ पर SKUAST एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स की रिकमेंडेड डोजेज होती है. वो आपको बता दें कि आप अपने क्रॉप में कितना पेस्टिसाइड कितने वक्त में डालेंगे. तो सत्य में छुपा. ठीक है ना. तो under this is called as non-judicious use of pesticides and without any scientific supervision. Scientific supervision जब नहीं होती है ना, तो यही होता है. आप डाल दो ना, क्या दिक्कत है? But environmentally how it is hazardous, environmentally how it is profound, they are unaware of that. That we can actually ascertain when we talk about the sediment, the soil, the water, the fish, and ultimately our crop. ठीक है ना? समझ आई बात? तो when you are starting your venture, you need to take these things into consideration as well. कि आपका एक्वा फार्म वहाँ पर हो. For example, you are starting your venture at a place which is besides an orchard. जहाँ पर apple orchard है और enormous amount of pesticides are being sprayed. ठीक है? तो what do you expect? What will be the area drift of those pesticides? It will be in your aqua farm. It will tell upon the health of the fish. Although we envisage that it will not cause the complete mortality, complete eradication, like the viruses and those fungal diseases cause. Okay? चलिए, ये है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि आप जो भी कुछ कैचमेंट में करते हैं ना एक वाटर बॉडी की, ठीक है ना, वो अल्टीमेटली दैट विल रीच टू द वाटर बॉडी. क्यों? मैंने कहा ना नेचुरली डिप्रेशन में है ना, एवरीथिंग इज बाउंड टू गो टू द नेचुरल डिप्रेशन. ठीक है ना. सेम इज द केस विद योर पॉन्ड, सेम इज द केस विद योर रेसवे, है ना, बिकॉज दैट इज अंडर द डिप्रेशन. इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर द फिशेस दैट दे लिव इन वाटर बिकॉज दे आर प्लेस्ड naturally in the depressions. ठीक है. Therefore, you have to keep your catchments clean. When you are starting your aqua farm for trout, you have to keep your trout farm distant from the places where you envisage that leaching or percolation or spray drift or inner drift will occur, and those xenobiotic compounds will reach your reservoirs. Okay? Next. ये तो है पेस्टिसाइड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं. आपको पता है रोडेंटिसाइड मींस जो हम रैट्स वगैरह को किल करते हैं. आप फीड जो है स्टोर कर रहे हैं ट्राउट के लिए, तो वहाँ पर रोडेंट्स का खतरा है. ठीक है. तो आप उनको क्या करते हैं, फीड की जो बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं उन पर आप डायरेक्ट रोडेंटिसाइड स्प्रे. आप वो रोडेंटिसाइड व्हेन यू स्प्रे ऑन दोज फीड्स मींस दैट रिमेन्स सस्पेंडेड ऑन द फीड, एंड व्हेन यू स्प्रे दैट फीड ऑन योर in your raceways, those rodenticides will directly go into the body of the fish, into the body of the fish, causing physiologically dysfunctions in fishes. Okay. Similarly, weedicides, ठीक है ना. तो weeds को आप अपने aqua farm को beautify कर रहे हैं.
आपने रेसवे को बनाया, साथ साथ आपने इर्द गिर्द अच्छे फूल लगाए, अच्छे वो ग्रास उगाई, और वहाँ पर जो अनवांटेड ग्रास आ रही है, यू आर जस्ट स्प्रेइंग द वीडिसाइड, चलो जी इसको ठीक करेंगे, बट दैट वीडिसाइड दैट विल गेट वॉश्ड अवे विद द रेन इनटू योर रेसवे एंड कॉज किलिंग ऑफ द फिश, ठीक है। एंड फंजिसाइड्स, आपको पता है हमारे ट्राउट में जो अक्सर डिजीज पाई जाती है वो सेप्टिलाइटिस, कॉटन वूल डिजीज, और उसमें नॉर्मली सर जी आप, अच्छा उसमें भी एक प्रॉब्लम, आप जी CuSO4 कॉपर सल्फेट का बात दे दीजिए, नॉर्मल सॉल्ट का बात दीजिए, आप बोलते हैं कितने मिनट, इवन BFSCs ग्रेजुएट्स दे सर रखिए 10 मिनट, although the recommended time is only 2 minutes. You don't know that the copper sulfate, if kept for more than 5 minutes, it will pierce into the body of the fish and cause toxicity. Copper toxicity is very profound toxicity in trouts. ठीक है ना? तो उसके लिए फंजिसाइड वगैरह हम फंजिसाइड्स को स्प्रे करते हैं ताकि उनकी जो कुकून्स हैं इनके सेप्टिलाइटिस के, वो हमारे इर्द गिर्द जमा ना हो, लेकिन अल्टीमेटली दोज फंजिसाइड्स इफेक्टिव है ना। Acaricides means mites. Mites we use against the mites, and insecticides against the insect pests. Next please. ये भी छोड़ दीजिए इसको। यही है entry of the pesticide from in the aquatic ecosystems from point sources and non-point sources. Point source को हम क्या बोलते हैं? तो defined source है। एक sewage pipe है, उसमें से sewage निकल रहा है और वो आपके रेसवे में, आपके पॉन्ड में, आपकी लेक में डायरेक्टली चला जाता है, एंड दैट्स डिफाइंड, यू कैन लोकेट दैट कि यहाँ से भाई गंदा पानी आ रहा है, जो स्वेज वाला पानी है जिसमें पेस्टिसाइड्स या मेटल्स या जीरो बायोटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, दिस कैन बी लोकेटेड, विजिबल, विविड, ओके, दिस इज पॉइंट सोर्स, बट मोस्ट ऑफ द कंटामिनेंट्स दे एंटर थ्रू नॉन पॉइंट सोर्सेज। अब मैंने आपको कहा लीचिंग हो रही है, लीचिंग का क्या मतलब है, उसने जमीन में एब्जॉर्ब हो गया और जमीन के अंदर अंदर वाटर टेबल से चला गया आपके एक्वाफार्म में, पॉन्ड में, अब आप उसको कहां से लोकेट करेंगे, दैट इज नॉट डिफाइंड, एंड दैट इज वेरी 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 profound for the health of the fishes. That's why we have to keep our aquafarms away from those areas where these pesticides are sprayed, क्योंकि लीचिंग की जो इंस्टेंस है, लीचिंग का जो खतरा है वो कम हो जाए, समझ में आई बात। चलिए, ये ब्लीच का भी जो मैं बोल रहा था, ब्लीच पाउडर आम जो है हमारे एक्वाफार्म्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, although we have developed a mechanism here to ascertain the levels of bleach here. अगर हमारे पास आती है कोई सैंपल या कोई मछली, we have developed a mechanism here in our toxicology lab. We can ascertain the levels of bleach within 4-5 hours. अगर वो, क्योंकि ये उड़ जाता है, जैसे आप देखिए ये ब्लीच है, पानी के साथ मिल गया तो ये क्लोरीन गैस उड़ जाता है ना, तो we are unable to this ascertain the levels or the values, quantify the level of bleach powder, ठीक है। लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये एक्चुअली दैट इज harmful, which causes the hypoxia and causes ultimately death of the fishes in your farms, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो रेड कलर में है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ ऑफ द पेस्टिसाइड्स। हाफ लाइफ का पता है सबको, हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि 1 ग्राम इस वक्त पेस्टिसाइड, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 1 ग्राम पेस्टिसाइड कंटेमिनेंट आपके वाटर बॉडी में या सेडिमेंट में चला गया, इसको कितना टाइम लगेगा 1 ग्राम से आधा ग्राम बनने में, ये उसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। एक पेस्टिसाइड देखिए, पहला ही DDT, इंपॉर्टेंट, पुराना and far most used pesticide, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 150 साल। 150 साल मतलब कि 1 ग्राम अगर ये चला गया कहां पर, इफ इट इज प्रेजेंट इन योर एक्वाफार्म एट द रेट ऑफ 1 ppm ओनली, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम है, आधा मिलीग्राम बनने में उस 1 लीटर पानी में इसको 150 साल लगेंगे। मींस आपकी जितनी भी मछलियां हैं ना, दे आर एक्सपोज टू दैट 1 ग्राम फॉर 150 years। समझ में आ रही बात। अब देख लीजिए ये कितनी भी माइन्यूट क्वांटिटी में है, लेकिन कंटिन्यूअस एक्सपोजर है कि नहीं फिश को, दिस विल कॉज द रिडक्शन इन द ग्रोथ ऑफ द फिश, समझ में आया। इसी तरीके से एल्डिकार्प, ये तो आसान है, 5 से 10 दिन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन पेस्टिसाइड्स
हमने रिकवर किए हैं जिनकी हाफ लाइफ 80-80 साल भी है, एंड दे आर प्रेजेंट इन अवर वाटर बॉडीज, ठीक है ना। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इवन इन माइन्यूट क्वांटिटी। देखिए जहर बहुत कम है लेकिन इंसान रोज खा रहा है, जहर कम क्वांटिटी में लेकिन इंसान रोज खा रहा है, और ये खा रहा है 80 साल के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, ओके। चलिए, ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या ये ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स हैं, ये 3 तरीके से हमारी मछली में रहता है। इट कैन इधर गो थ्रू फीड, है ना, आप मैंने यही कहा, आपने रोडेंटिसाइड्स के लिए स्प्रे किया, आपका फीड कंटामिनेटेड था, इट विल मूव through the GIT and it will be absorbed by the fish through the GIT, gastrointestinal tract, okay. Or it can, if it is present in the water, it will be directly taken up by the fish through the gills. और इसमें डर्बल एब्जॉर्प्शन भी होती है, सीधे पानी में पेस्टिसाइड है और वो डर्मिस के थ्रू सीधे जो है उसको पायरस करता है और उसको बिल्कुल उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करके अंदर चला जाता है, ठीक है। चलिए, अगर हमारी मछलियां ट्राउट्स बहुत कम क्वांटिटी में उनको एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड्स होगा, फिर भी हमारे पास एक खदशा है कि वो सारे का सारा लॉट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि वो हम खा भी नहीं सकते हैं, बिकॉज दैट इज कंटेमिनेटेड, इट विल रीच द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा इस ट्राउट कल्चर में कि एक डेडली वायरस है जिसको हम बोलते हैं IPNV, इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिक नेक्रोटिक वायरस, वो ट्राउट में लगता है। अगर वो ट्राउट फार्म में लगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू इंसेरिनेट द फार्म, आपको जलाना है उन मछलियों को, और उस ट्राउट के रेस्वे को भी जलाना है, तब जाके वो वायरस मरेगा। अदरवाइज अगर आपने जलाने के बगैर उसमें नई मछलियां डाली ट्राउट की, वो फिर से वो वायरस डेवलप होकर उनमें चढ़ता है, और अगर वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो गया, ह्यूमंस डायरेक्टली इट विल कॉज डेथ ऑफ द IPNV, इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिक नेक्रोटिक, ठीक है ना। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जब वायरल डिजीज एक हो गई, then you have to incinerate the farm, but when it is the matter of contamination of trouts, means उनके अंदर पेस्टिसाइड की वजह से मौत हो गई और वो पेस्टिसाइड उनके जिस्म में, and you are about to eat them, what will happen to you? ठीक है, this pesticide will cause disruption in you people as well through the process of biomagnification and bioaccumulation. Therefore, it's not recommended that you eat those trouts which are contaminated due to the pesticide. ठीक है, ये तो हो गया अगर छोटी-छोटी कंसंट्रेशन में पेस्टिसाइड, लेकिन अब अगर बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में है, at least if it will not cause the mortality of the fishes, but it will affect the fishes like this. Means it will cause in them the behavioral changes, it will cause them in them the histological changes, किसी भी जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इतनी रिड्यूस हो गई कि आपने 1 रुपया तो खर्चा किया एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको वहां से चवन्नी भी वापस नहीं, ठीक है। It will cause serious disruption in the fish growth, which will reduce your growth of your crop, ठीक है। चलिए, ये देखिए स्मॉल ये टेबल मैंने ये किया है, यहाँ से कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ से उनका LC50 वैल्यू है। LC50 वैल्यू सबको पता है, ठीक है ना, लीथल कंसंट्रेशन एट विच 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल डाई। मतलब अगर आपके रेस्टे में 1000 मछलियाँ हैं, कौन सा पेस्टिसाइड किस क्वांटिटी में चला जाएगा कि 1000 में से 500 मछलियाँ मर जाएंगी। अब देखिए पहला पेस्टिसाइड, उसका क्या है 6.43 माइक्रोग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना, PPB, एंड इट इज इन केस ऑफ ट्राउट्स ओनली। मैंने ये डेलिबरेटली ट्राउट्स में इस वजह से दिया है बिकॉज यू आर हैविंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ट्राउट। मींस अगर पार्ट्स पर बिलियन में कितनी माइन्यूट क्वांटिटी होती है, स्टिल द हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन विल वैनिश। इसी तरीके से यू जस्ट सी द क्लोरोपाइरिफॉस, ये जो क्लोरोपाइरिफॉस पेस्टिसाइड है ये हमारे कश्मीर में एक्सटेंसिवली यूज होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, indiscriminately, and see it's 0.009 milligrams per liter ppb. How small the quantity is, and it will cause loss of the half of your population. Okay,
एंड सिमिलर इज द केस विद डाइक्लोरवास एंड साइक्लोमेक्स, ठीक है ना। माइक्रोग्राम देखिए ना, माइक्रोग्राम्स में मींस आपको ग्राम्स में पेस्टिसाइड, ग्राम में तो बात ही नहीं, ठीक है। चलिए, दीज आर सम स्लाइड्स, उनकी गिल्स के अगर ये बहुत मतलब आपका जो है ट्राउट है ना बच ही जाए मोर्टेलिटी से, स्टिल उनकी गिल्स इफेक्ट हो रही है, इट विल टेल अपॉन द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ देम, ठीक है, कॉजिंग हिपोक्सिया, कॉजिंग लेस ब्लड सर्कुलेशन, कॉजिंग लेस, ये है गिल का स्लाइड नीचे, ठीक है। ये आपके लिवर का है, ठीक है ना। लिवर एंजाइम डिस्ट्रप्शन, लिवर एंजाइम का डिस्ट्रप्टिव होने का मतलब फिश के अंदर जो मेटाबॉलिक ग्रोथ है वो ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी फिश क्रॉप कम हो जाएगी। नंबर 3, एंड दिस इज द स्लाइड ऑफ GIT, इंटेस्टाइन्स का, intestinal villi, they are destroyed due to which absorption of the food will be restricted, means FCR will be affected, और FCR इफेक्ट होता है आप जितना भी फीड यहाँ से फिश को डालें, ये फिश तो लीन ही रह रही है, ये तो बड़ी दे रही है, क्यों? उसके अंदर फीड कन्वर्जन रेशो कम हो गया, ठीक है ना। चलिए, एंड इम्पैक्ट ऑन देयर ब्लड पैरामीटर्स, ठीक है ना। It will cause destruction of their blood hematocytes. Destruction of hematocytes means less carrying capacity of the oxygen, ठीक है ना। और उसकी वजह से ये सारे आपका हेमाटोक्रिट, हेमोग्लोबिन और आपका DLC it will be reduced, और नीचे और आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है, ठीक है, प्लाज्मा एंजाइम्स है, ठीक है, और ये जो लिवर एंजाइम्स है, they are all reduced. That means overall the growth of the fish is reduced. Last में recommendations क्या है इसकी? Judicious use of pesticides. Judicious means we will try to switch over to organic farming, even though we will not be able to switch it fully, okay, but जहाँ तक हमसे हो सके हम इन xenobiotic compounds का use restrict करें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं judicious use. Number 2, reduction risk of pesticide transport from point and non-point sources. हमें we have to define where from our pesticides is coming. अच्छा, एक बात बताऊँ. Let us talk an example of Dal Lake. Everybody is going visiting Dal. अगर आप यहाँ से नेशनल फोरशोर से चले जाएंगे towards निशात and बुलवार्ड, right side your Dal will fall, okay? आपके लेफ्ट साइड्स पे ऑर्चर्ड्स हैं, वेजिटेबल गार्डन्स हैं, ठीक है. लेकिन आपने देखा है कि वहां पर गेट्स हैं, बड़े बड़े गेट्स बीच बीच में, वो गेट्स क्या हैं? Have you ever pondered over them? Those gates are actually when the rise of the water level in Dal will occur, they will try to open those gates ताकि वो पानी बाहर निकले और सैलाब कम, ठीक है ना. But do you know those gates are the potent entry points of xenobiotic compounds which are actually going inside through the beneath the road to the Dal. Nobody ponders over there. ठीक है ना. So we have to define the point sources and non-point sources. Point sources को तो तबाही हमें करना है कि we will not allow their entry to our aquaculture and restrict the entrance of location of non-point sources as well. ठीक है. And switch over to organic farm. मैंने कहा आपको, it's not completely possible. You cannot be absolute organic farm, but up to your level of your comprehension, you can switch over to the organic. And pesticides जितने भी हैं, जितने classes हैं, उनमें components में बहुत ज़्यादा देर तक ना रहें, ठीक है? Their half life is very low. Their half life is very low. उसमें एक thumb rule आपको याद रखना है. The pesticides having more hydrophilicity, they are better. Water loving nature, because जितना उनका water loving nature होगा उतने वो lipophilic नहीं होंगे. Lipophilic pesticides are environmentally persistent. Okay? समझ में आई बात? Next. चलिए. अगर कोई सवाल है तो